Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today we are going to do the analysis of a very famous novel, The Portrait of the Artist as a Young Man. This is written by the famous Irish writer James Joyce. Let us proceed to the video now. Portrait of the Artist as a Young Man novel published हुआ था 1916 में by the Irish writer James Joyce. It tells the story of Stephen Dedalus. Stephen Dedalus नाम के एक कैरेक्टर की स्टोरी बताती है. A boy growing up in Ireland at the end of 19th century. It was the first novel of this writer, James Joyce, the Irish writer, and written in a very modernist style. The style which traces the religious and intellectual डेवलपमेंट ऑफ यंग स्टीफन टेडलस. स्टीफन टेडलस को बोला जाता है कि वो जेम्स जॉयस के ही एक फिक्शनल ऑल्टर ईगो भी थे. कहीं ना कहीं जेम्स जॉयस की खुद की पर्सनालिटी स्टीफन में रिफ्लेक्ट होती है. लेट अस टॉक अ बिट अबाउट जेम्स जॉयस. जेम्स जॉयस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट राइटर्स ऑफ मॉडर्निस्ट एरा. बहुत ही वर्सेटाइल राइटर थे. एक्सप्लॉइटेड द टेक्निक ऑफ stream of consciousness in his novels. उनका मेजर वर्क माना जाता है यूलिसिस 1922 का, which is considered to be a masterpiece of modernism. This novel, A Portrait of the Artist as a Young Man, deals with the modern issues of religious extremism, sexuality, self, and the development of artists' growth, both intellectually and spiritually. इस नॉवल का जो मेजर थीम है दैट इज कन्सलरोमैन. इसका मतलब ही होता है अ थीम ऑफ ग्रोथ. इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. आइडियाज ऑफ innocence and experience of change and maturation are central to every Künstlerroman, a novel that narrates an artist's growth and development, of which Portrait is one. Portrait of the Artist. In short, we call it just Portrait. तो एक ऐसे नॉवेल जिसमें हमें इनोसेंस दिखाई जा रही है अपने सेंट्रल कैरेक्टर की, और उसके बाद विद द एक्सपीरियंस द कैरेक्टर रीचेस टू अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी. किस तरीके से एक पर्सन की ग्रोथ होती है, एंड दैट इज नॉट द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन स्पेसिफिकली. व्हेन वी से दिस वर्ड कन्सलरोमैन, इट मींस द ग्रोथ ऑफ द आर्टिस्ट. एक इंसान अपने अंदर छुपे हुए एक आर्टिस्ट को पहचानता है. दैट इज व्हाट कन्सलरोमैन इज. Let us see, why do we call this novel a Künstlerroman? Künstlerroman because it gives a dissertation or information on the protagonist's progress as an artist. As an artist, उस हमारे protagonist ने, हमारे central character ने कैसे progress किया. स्टीफन, एज आई टोल्ड यू इनिशियली, ऑल्सो ऑल्टर ईगो माने जाते हैं जेम्स जॉयस के ही. जैसे जेम्स जॉयस ने खुद को डेवलप किया, उसी तरीके से स्टीफन नाम के इस कैरेक्टर को डेवलप किया. वन कुड सी हिज डेवलपमेंट एज एन आर्टिस्ट एंड द जर्नी ऑफ फाइंडिंग बोथ डिवाइन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. अगर आप नॉवेल पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, यू विल फाइंड कि कैसे हमारे सेंट्रल कैरेक्टर की जर्नी हुई, कैसे हमारे सेंट्रल कैरेक्टर की धीरे धीरे ग्रोथ हुई. फीचर समझते हैं कन्सलरोमैन का. द मेन फीचर ऑफ कन्सलरोमैन नॉवेल इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. अपनी आइडेंटिटी पता होना किसी इंसान के लिए कितना जरूरी है. और जब किसी भी इंसान को जो कि अपने करियर मेकिंग ईयर्स में होता है, उस टाइम पर अपनी आइडेंटिटी पता चल जाए, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि इफ ही और शी इज सपोज टू बी एन आर्टिस्ट, तो किस तरीके से अपनी लाइफ परस्यू करनी है. The main protagonist undergoes a series of arousal both intellectually and spiritually. पहले वो spiritual life में जाना चाहते हैं, but slowly and steadily he comes to know कि spiritual life is not meant for him. Stephen Dedalus grew up in a strict Catholic disposition. जो उनके आसपास का environment रहा throughout his growing years, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कैथोलिक एनवायरनमेंट रहा. लेकिन उस एनवायरनमेंट से भी बाहर आकर उन्होंने अपने अंदर के आर्टिस्ट को पहचाना. The central character was asking multiple questions from the people around him and from himself. बहुत क्वेश्चंस करते थे about the religious tendencies of the society. And
while making these questions he was conflicting with his self. अपने आप को कहीं ना कहीं मेजर कर रहे थे, अपने व्यू पॉइंट्स को कहीं ना कहीं, अपनी नीड्स को, अपने डिजायर्स को मेजर कर रहे थे उन रिलीजियस बिलीव्स के साथ साथ, अपने सेक्सुअल डिजायर्स और अपने आर्टिस्टिक डिजायर्स, उन सब का एक आकलन, उन सब का एक एनालिसिस कर रहे थे थ्रू आउट द नॉवेल. As he was questioning himself, as he was growing up, he realizes slowly and steadily that religious life and priestly life not meant for him. He decides to suppress the idea of being involved in a religious life. This also shows his growth and development of self, where he tries to civilize himself, the right conscience, towards the right conscience, and the things that may be harmful for a person, that may be good for a person. अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ आप सोसाइटी की पसंद के हिसाब से या सोसाइटी के प्रेशर के हिसाब से कर रहे हैं, so that may not keep you happy forever. But he wanted to do something for himself, and that he realized by the end. Let us read it now. So additionally, what we can say, the significant aspect of Künstlerroman novel is the growth of the protagonist as an artist. ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी बहुत जरूरी है, growth of the protagonist as an artist. Artist word को मत भूलिएगा. Stephen Dedalus followed his passion on aesthetics and beauty, where he resolves to show his passion to his friends, yet it was unrelatable to his friends. अपने दोस्तों को उन्होंने अपना पैशन दिखाया, अपना पैशन बताया, कुछ दोस्त रिलेट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए. Stephen's growth of an artist has revealed that one must chase alone to pursue one's dream. अगर हमें अपने सपनों को पाना है तो अपने सपनों को पाने के लिए हमें अकेले ही मेहनत करनी पड़ती है, जो कि स्टीफन ने की. So let us conclude with the definition of Künstlerroman. A novel that deals with the youth and development of a human who chooses to become an artist. That artist can be any artist, a painter, a musician, a poet, a writer. The classic example is James Joyce. जेम्स जॉयस की पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट को सच में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है कंस्टलरोमैन का. जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, एनी ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड टू कंस्टलरोमैन, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट का एग्जाम्पल ना दिया जाए. तो आपके पास तो बहुत अच्छी एडवांटेज है, आपने पूरा ये नॉवेल पढ़ा है. यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. आपको इस नॉवेल से रिलेटेड जनरली थीम ऑफ ग्रोथ का क्वेश्चन आता है, उसमें आप कंस्टलरोमैन को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कंस्टलरोमैन का ही क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड आफ्टर योर एग्जाम प्लीज टेल मी हाउ मच दिस वीडियो helped you. So that was it for this part of the video. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link in description to get connected to us for your admission in the academy. Thanks a lot for watching. Best of luck for exams, and please do not forget to share and subscribe the channel and put your valuable feedback in the form of comments.